Fourth statement, a hieroglyph is a dash word that is a Greek word. It's a combination of normally two Greek words, that is hieros and the glyph. So it's a Greek word. Last fifth option है the Rosetta Stone was created in dash year, that is 196 before Christ. A option that will. So ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक. So Egyptian started first statement है Egyptian started using the name of dash for their kings. So जो word उन्होंने यूज़ किया था अपने फेरो अपने किंग के लिए, that is the pharaoh. सो नॉर्मली इजिप्शियंस अपने किंग को फेरो के टाइटल से कॉल करते हैं. सो फेरो टाइटल यूज़ किया जाता था फॉर देयर किंग, दैट इज़ फेरो. सेकेंड स्टेटमेंट है इजिप्शियंस हु वर पुअर वर ब्यूरिड इन. सो जो पुअर वंस थे वो ब्यूरिड इन द सैंड एंड द रिच वंस वर ब्यूरिड इन टॉम्स. सो यहाँ पे आपसे उन्होंने पुअर्स का पूछा, दैट इज़ दे वर ब्यूरिड इन सैंड. Third statement is the estimated mass of a Great Pyramid of Giza is, that is 5.9 million tons. So 5.9 million tons. Fourth one, mummification was a lengthy process which lasted up to 40 to 50 days. So it is 40 to 50 days. Fifth one, Egyptian believed in many gods, so they were polytheistic. So those who believe in one god are monotheistic, but the Egyptians believe in many gods, so they were polytheistic. Polytheistic होते हैं जिनका belief multiple gods पर होता है. So that's the question number 2. Now move on to the question number 3. That is, state whether the following statement are true or the false. So first statement, Egyptian believed in one god, so they were monotheistic. Is it true statement or false? So it's a false one because they are polytheistic. Polytheistic होते हैं जो multiple gods पे believe करते हैं, and Egyptians believed in many gods. The Nile River is the world's longest river. That's a true one. So it's true. Greek writing is used for the religious. So it's a false one because Greek writing used की जाती है rulers के लिए कि वो लोग अपने negotiate वगैरह करें या अपने मेजर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रूलर्स राइट डाउन करें. बट रिलीजियस डॉक्यूमेंट के लिए हमारे पास हीरोग्लिफ यूज़ होती है. सो हीरोग्लिफ यूज़ किए जाते हैं रिलीजियस डॉक्यूमेंट के लिए, ग्रीक राइटिंग नहीं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. द लार्जेस्ट पैरामिड बिलोंग्स टू कुहुफ. सो इट्स ए ट्रू वन बिकॉज द लार्जेस्ट पैरामिड बिलोंग टू द फेरो कुहुफ. उनके लिए ही उनको बिलोंग किया गया था जो लार्जेस्ट पैरामिड बनाया गया था कुहुफ में. सो इट्स अ ट्रू वन. And the last one, fifth statement, Egyptians do not believe in after death journey. So it's also false because they do believe in after death journey. Alright, ये आपके पास true first statement है. and question number 4 है आपके पास. So first question आपके पास है, what are the main features of Egyptian civilization. So हम लोगों ने जो भी चैप्टर में go through कि उनके मेजर फीचर्स थे, उनकी फार्मिंग थी, उनका आर्किटेक्चर था, दैट इज pyramids, their kings, pharaoh, their complicated religion, that is they were monotheistic, they were polytheistic because they believe in multiple gods. And their writing system, hieroglyphs, so there were total 3 different scripts in their writing system, Greek writing, demotic writing और the hieroglyphs. So आप इनके कोई भी मेजर मेन फीचर्स राइट डाउन कर सकते हो. इनमें आप इनके फार्मिंग का मेथड भी लिख सकते हो. फार्मिंग में इनके पास शादुफ मेजर टूल था, वो राइट डाउन कर सकते हो. So it's up to you. What is meant by hieroglyph? So hieroglyph is simply the combination of two Greek words, that is hieros and the glyph. Hieros means holy and the glyph mean writing. So the hieroglyph means holy writing. So third statement है, where were the people of ancient Egypt mummified? So हमने start में डिस्कस किया, जो poor ones हैं they were buried in the sand and the rich ones were buried in the tomb. What kind of fourth statement, what kind of crops did farmers of Egypt grew? So उनके कुछ major crops थे जो वहाँ की जो फार्मर्स थे उन्होंने ग्रू किए थे, दैट वाज wheat, barley, vegetables, figs, something kind of a seed that helps to produce mulberry. So melons and the other last one is pomegranates. So ये आपके पास complete worksheet है जो आप complete करोगे. That's it. Good.